हेलो बच्चों। आज मैं क्लास 9 के साइंस के चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को इजी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको प्रेजेंट करूंगा। दैट इज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन। सो नाउ लेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम बिकॉज टाइम इज वेरी प्रीशियस। एटम्स एंड मॉलिक्यूल। इंट्रोडक्शन टू मैटर, atoms and molecules. If somehow we could go on dividing matter, we will get smaller and particles. Ultimately, we will get the smallest particle of matter which cannot be divided any further. This smallest particle of matter will be atom. All matter is made up of small particles called atoms and molecules. Now, this is a gold brick. इस गोल्ड ब्रिज को कट करेंगे और कट करते जाएंगे, कटते करते जाएंगे। इन द लास्ट एक ऐसा छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल आएगा जिसे हम फर्दर कट नहीं कर सकते, लाइक दैट वन। दिस इज कॉल्ड अ एटम। लेट अस स्टडी बर्निंग रिएक्शन। ऑन बर्निंग चारकोल इट लीव एश एट द एंड। अगर हम चारकोल को बर्न करेंगे तो वो क्या छोड़ेगा? लास्ट में एश छोड़ेगा। लेकिन ये आपका चारकोल जाता कहाँ है? वेयर डज द मैटर चारकोल को? Where? You have any idea? Now, these several questions and other similar questions fascinated scientists for many reasons. Burning and combustion reaction puzzled them to a great extent. Now here is two law which is in law of chemical combination. This is law of chemical combination, law of conservation of mass. Lavoisier studied combustion reaction in detail. Lavoisier ने इसको कंबर्शन रिएक्शन को डिटेल में स्टडी किया। Antoine Lavoisier was a French nobleman. He was able to find the masses of reactant product accurately. Irrespective of their physical state, उसके physical state के irrespective. He made many important contribution. उन्होंने बहुत सारी contribution दिए chemistry में. Some call him a father of modern chemistry. कुछ लोग उन्हें father of modern chemistry भी बोलते हैं. Based on these observation, he proposed the law of conservation of mass. इसी ऑब्जर्वेशन पर ये प्रपोज्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमारा एम क्या है? दिस इज एक हम प्रैक्टिकल करेंगे टू फाइंड आउट द चेंज इन द मास बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे कुछ मटेरियल्स हमें चाहिए होंगे। मटेरियल्स होगा हमारा बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, डिस्टिल्ड वाटर, conical flask, small test tube, rubber cork, spring valence, retort, stand and thread। क्या इसका प्रोसीजर होगा उसे स्टडी करते हैं। फर्स्ट स्टेप, प्रिपेयर अ सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड बाय डिसॉल्विंग बेरियम क्लोराइड in distilled water in a 250 ml conical flask. This is the barium chloride and that is a conical flask. This is the barium chloride, this is a conical flask. Now put some barium chloride in conical flask and pour some distilled water in it. Take some solution of barium chloride in a small test tube from above prepared solution। यानी कि जो अभी हमने एक सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया था बेरियम क्लोराइड को,
उस सॉल्यूशन को हम एक स्मॉल टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लेंगे। नाउ दिस इज अ टेस्ट ट्यूब एंड हियर इज सम barium chloride solution. Prepare the sodium sulfate solution by dissolving sodium sulfate in water in another conical flask. सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन को हम डिसॉल्व करेंगे, सोडियम सल्फेट को सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, सोडियम सल्फेट को डिसॉल्व करेंगे वाटर के अंदर एक अलग कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। दिस इज द sodium sulfate solution. This is a conical flask. Now put some sodium sulfate in conical flask and pour some distilled water in it. Hang the test tube containing of barium chloride in the conical flask contains sodium sulfate solution carefully without mixing the solution. Close the flask with a cork. Just like this. इसकी तरह देखो ये। Weight the flask with its content. इस फ्लास्क का क्या करेंगे, वेट करेंगे पूरे कंटेंट के साथ विद स्प्रिंग बने वेरी केयरफुली। नाउ टिल्ट एंड स्विल द फ्लास्क सो दैट द टू सॉल्यूशन मिक्स। ऐसे करेंगे। देन आफ्टर next point, weight the flask again using the same spring valence as shown in. उसी सेम स्प्रिंग वैलेंस के थ्रू उस फ्लास्क का क्या करेंगे, वेट करेंगे। Here is some reading. रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन, इसको रिकॉर्ड करो। इस ऑब्जर्वेशन को आप रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करने के आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि वेट ऑफ द फ्लास्क and content before mixing and weight of the flask and content after mixing is all equal or equal. Barium chloride when react with sodium sulfate, white precipitate of barium sulfate is formed along with sodium chloride. BaCl2 plus Na2SO4 react and form BaSO4 plus NaCl. BaSO4 is a white PPT, white precipitate. A chemical reaction takes place and the mass remains same before and after the chemical reaction. Therefore, mass is neither be created nor destroyed in a chemical reaction. ना तो मास को आप क्रिएट कर सकते हो, ना आप उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो किसी भी केमिकल रिएक्शन में। The chemical reaction take place in the above experiment can be written as, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, barium chloride plus sodium sulfate and gives barium sulfate and sodium chloride. In an experiment to verify the law of conservation of mass, the following data was obtained. The mass of barium chloride, आपके पास मास बेरियम क्लोराइड का मास कितना आ गया 20.8 ग्राम, मास ऑफ सोडियम सल्फेट कितना आ गया 14.2 ग्राम, मास ऑफ बेरियम सल्फेट फॉर्म कितना आ गया 23.3 ग्राम एंड मास ऑफ सोडियम क्लोराइड कितना आया आपके पास 11.7 ग्राम। In this case, barium chloride and sodium sulfate are reactant. इसके अंदर आपके पास बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट क्या है आपके पास रिएक्टेंट है। मास ऑफ रिएक्टेंट mass of reactant 35.0 gram. Here barium sulfate and sodium chloride are
प्रोडक्ट्स। मास ऑफ प्रोडक्ट आपका क्या आ गया? मास ऑफ प्रोडक्ट आपका आ गया 35.5 ग्राम। इट मीन्स द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट 35 gram in this chemical reaction is equal to the total mass of reactant 35.35 gram. Therefore, the given data verify the law of conservation of mass. Law of conservation of mass. Lavoisier carried out the burning of charcoal in a closed apparatus and found no charge in mass. यानी नो चेंज इन मास। उन्होंने फाइंड आउट किया कि कोई भी चेंज नहीं है उस मास के अंदर। Attorney Lavoisier, on the basis of this experiment, he proposed the law of conservation of mass. उन्होंने ये propose किया law of conservation of mass on the basis of that experiment. It states that matter is neither created nor destroyed during a chemical reaction. किसी भी chemical reaction के during किसी भी मैटर को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना उससे हम क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। More simply, the mass of product is equal to the mass of the reactant in a chemical reaction. यानी किसी भी chemical reaction के अंदर जो आपका reactant का mass होगा वो always equal होगा आपके product के masses के। Now numerical based on the law, 12 gram, 15.9 gram of copper sulfate and 10.6 gram of sodium carbonate react together and to give 14.2 gram of sodium, 14.2 gram of now 15.9 gram of copper sulfate and 10.6 gram of sodium carbonate react and gives 14.2 gram of sodium sulfate and 12.2 gram of copper carbonate. Which law of chemical combination OA CuSO4 Na2HCO3 and sodium carbonate react and gives sodium sulfate and copper carbonate? 15.9 gram of copper sulfate, 10.6 gram of sodium carbonate react and gives sodium sulfate 14.2 gram and copper carbonate 12.3 gram. 26.5 gram is reactant and 26.5 gram is product. Now the total mass of product is equal to the total mass of reactant, and total mass of product is equal to the total mass of reactant. Here the law of conservation mass is of carbon dioxide is added 12.2 gram of calcium oxide. The product formed is 200 gram of calcium carbonate. Calculate the mass of carbon dioxide used. Which law of chemical combination will govern your answer? You have any idea? Let's start solving this problem. Carbon dioxide and calcium oxide gives calcium carbonate. Mass of carbon dioxide plus mass of calcium oxide and mass of calcium carbonate. Mass of carbon dioxide plus 112 is equal to 200. Mass of carbon dioxide 200 minus 112, which gives 88 gram. The law of conservation of mass governs the answer.